Good morning, ninth class. Welcome back in economics class. Okay, so we were doing the chapter secondary sector and industries, right? In the previous video, I explained you about that what is industry, okay, and what is capital goods, what is consumer goods, everything. Now today we will understand and the features that how these industries are important for any economy. Okay, so I have explained all these things. Okay, so in this video we will understand that the contribution or interdependence of agriculture and industry. See, this industry and agriculture, even though our country is an agriculture based country, but then also the agriculture and industries are interdependent on each other, right? ये दोनों क्या एक दूसरे पे dependent, okay? अब in this basically the growth and the development of industry as well as agriculture is important for any economic development. दोनों जरूरी है, राइट? ऐसा नहीं हम कह सकते वी कैन नॉट बाइकआउट इंडस्ट्रीज और आइदर वी कैन नॉट बाइकआउट एग्रीकल्चर. बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड बिकॉज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड with each other. Okay, so let's understand that how this industries depend upon agriculture and agriculture is depend upon industries. So let's start. So contribution of agriculture to industry. That what is the contribution of agriculture? How the agriculture is playing an important role and how the agriculture is contributing to industries. कैसे agriculture help कर रही है? First, raw materials, supply of raw materials, right? It is very clear that all the raw materials we get from the primary sector only, right? By extracting the by exploiting the natural resources. Okay, जब भी हम natural resources को exploit करते हैं, we get it from there only we get the things. Okay, so that comes under your primary sector. And जो भी raw materials we get from either if it is wood, we get it from the forest, from the trees, right? If it is a cotton, we get it from the plants, right? Egg, we get it from the hen. So what is this? All these things we are getting from the primary sector only. So all the raw materials are supplied by the agriculture. कौन supply करता है सारे raw materials को? Agriculture, right? Next, supply of food, right? This is the second contribution of agriculture to industry. Supply of food. All of us are getting the food. Even though the laborers, those who are working in the industries, they also get food from the agriculture only, right? ये सारे food की supply भी कौन कर रहा है? Agriculture कर रहा है, right? So in this way, the supply of food is also done by the agriculture, okay, to the industries. क्या industries से setup करने से ऐसा है कि कोई बिना खाए रह सकता है? Not possible, right? Next, source of capital formation. Now, what is capital formation? Basically, capital formation means production of more and more capital goods. Okay, so production of more and more capital goods which can be used for further production, जिसको हम दोबारा और production में कर सकते हैं. So that is your capital formation, right? So basically, it is a source of capital formation. This agriculture is the source of capital formation. क्योंकि जो लोग those who are busy engaged in the agriculture sector, क्या होगा जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी उनकी ज़्यादा कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगी. We will see, we will discuss that कैसे इनकम बढ़ेगी, right? So in this way they will save their money. अब जब अपनी मनी सेव करेंगे, so they will invest that money somewhere for capital formation. अच्छे प्रोडक्शन में यूज करेंगे. Okay, so in this way this is a source of capital formation. इस तरह से ये capital formation का एक source है. Next is provide good market for consumer and capital goods. I hope that this is clear because in the previous video I explained you about the consumer and capital goods, that what is consumer goods and what is capital goods. So basically this agriculture provides good market for the consumer as well as capital goods. ये क्या करती है? अच्छा market provide करती है, ठीक है, consumer goods और capital goods के लिए, right? Next is source of healthy and strong labor. Now you know the people, those who are engaged in agriculture sector, they are very strong, right? वो कहीं ना कहीं strong, बहुत strong होते हैं because they are doing the physical work. ठीक है, वो बहुत physical work कर रहे हैं तो बहुत strong होते हैं. Okay, so इससे क्या होता है? अब मान लो जो labor, those who want to shift from the agriculture to industry, इससे क्या होगा? जो healthy और strong labor will be used in the industry. ये क्या है? इंडस्ट्रीज में हेल्प करेंगे. तो इस तरह से लेबर्स का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू
industries. Alright, clear it? So agriculture is the source of labor, and we know that agriculture in which the labor, there are two words. I just want to tell you that capital intensive technique, okay, capital intensive technique, and the second one is your labor intensive technique. Labor intensive technique. Right? Now these two words, I know this is new for you. Capital intensive technique, वो techniques होती है in which we use only the machines, tools, right? जहाँ पे आप ऐसी चीजों का यूज करते हैं for the production. So that is your capital intensive technique. In short, we call it as a CIT. Capital intensive technique means in which when we use machines, tools, new equipments for the production process, that is capital intensive technique. And labor intensive techniques are those techniques in which labors are used. जिसमें क्या होता है, लेबर्स का यूज किया जाता है, राइट? जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, बिकॉज वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द लेबर्स, राइट? जैसे फिर जैसे आपकी स्टिचिंग वर्क होता है, या जैसे लखनऊ की चिकन वर्क होता है, राइट? सो दैट ऑल आर द लेबर इंटेंसिव टेक्निक विच इज टोटली डिपेंड अपॉन द लेबर्स और द मैन पावर, राइट? सो दीज टू वर्ड्स आर द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. फिर सो इस तरह से क्या है कि जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली इट इज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क, एक फिजिकल वर्क की रिक्वायरमेंट है, राइट? So all this is there, okay, and this labor can be effectively employed, and the laborers, those who are engaged in agriculture, they can be effectively used in the industries also, okay. So in this way, this is the contribution of agriculture to industries. Clear? Next is your contribution of industries to agriculture. So now contribution of industry to agriculture. In this, basically the supply, first contribution is supply of modern inputs. Now here the industries help to improve the agriculture productivity by the means of providing many inputs like chemical, fertilizers, machines, tools, ठीक है? तो क्या करती है जो इंडस्ट्रीज हैं, दे प्रोवाइड मॉडर्न इनपुट्स. वो क्या देती हैं? मॉडर्न इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं किनको? फार्मर्स को और एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिससे क्या हो कि प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़े, राइट? अच्छा प्रोडक्शन हो, इफिशिएंट प्रोडक्शन हो, एंड द प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज. सो दैट इज योर सप्लाई ऑफ मॉडर्न इनपुट. क्लियर? नेक्स्ट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. ठीक है, अब क्या नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेसिकली क्या होती हैं? जैसे आपके डैम्स हो गए, रोड्स हो गए, विच इज़ हेल्पफुल इन द इकोनॉमी, राइट? जो इकोनॉमी को हेल्प करते हैं. फिर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई. सो ऑल दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर, okay, of any economy. Clear? So basically infrastructures created for agriculture in the form of irrigation projects, connecting roads, transportation vehicles, etc. would not have been possible if industrial sector would not have been produced cements, motor trucks, electric power. ठीक है, तो जैसे रोड्स का बनना, कनेक्टिंग क्या है कि गांव को रूरल टू कनेक्ट रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, वी नीड रोड, transportations, right? So ये सब कैसे possible है? When we get the cements and all this, and that is possible because industries are there. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं these industries plays a very important role in infrastructure development. ठीक है, infrastructure development कहीं ना कहीं industries की help से ही होता है. So ये industries agriculture को infrastructure facilities भी provide करती है. Second is employment avenues. Now in this the industries provides the employment opportunities, okay, to the surplus people, those who are engaged in agriculture sector, right? Some people क्या होता है कि extra होते हैं, okay, they are busy in this agriculture sector, but actually they are not getting the right income, right? So उन लोगों को यहाँ पे ये employment opportunities provide करता है, so that they can use their skills and their hard work and to earn their income. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं industries provide the employment opportunities to these laborers, right? Next is your meeting high income demands. Now here meeting high income demands from the first point. Now the modern techniques
मॉडर्न इनपुट्स आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, राइट, नई नई टेक्निक्स प्रोवाइड की जा रही है फार्मर्स को, मॉडर्न इनपुट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सो इन दैट कंडीशन क्या होगा कि उनकी प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्टिविटी यानी फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज करेगी, राइट. तो इंक्रीज करेगी तो उनकी कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज करेगी, राइट. और जब फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली दे विल क्रिएट डिमांड इन द मार्केट. मार्केट में क्या होगी, डिमांड क्रिएट होगी. ओके, सो कहीं ना कहीं इट मीन्स दिस इंडस्ट्री इज हेल्पफुल, they increases the income of the farmer and because of that the demand also increases in the market, so meaning high income demand. So this is the contribution of industries to agriculture and this is the contribution of agriculture to industries. Okay, so I hope that this is clear to you. Okay, so let's understand the types of industries. So let's see the types of industries, right, on the basis of size, on the basis of raw material and on the basis of ownership. On the basis of size, small scale industry, medium scale industries and large scale industries, right. On the basis of raw materials, okay, basically in this chapter we have to just understand on the basis of size, that is small scale, medium scale and large scale industries, right. On the basis of raw materials, agro based means these are those industry which is based on the agriculture raw material, ठीक है, which we directly get from the agriculture and we convert them into the finished product, जैसे sugar है, okay, that we get from the sugar cane, okay, edible cooking oils है, we get from the oil seeds. So all these are the agro based, नाम से ही पता चल रहा है agriculture से जो directly connected है, right. Forest based means the forest produce products like timber, herbs, okay, grasses, bamboos, all these are the forest based, which get from the raw material which we get from the forest. Pastoral means होता है कि जैसे कि आपका कह सकते हैं your means होता है कि the raw which we get from the animals, right, जैसे milk products हो गए, leather goods हो गए, woolen हो गए, silk हो गए, all these are the pastoral based. Minerals, iron, okay, steels, any chemicals, fertilizer, petrochemicals, all these are the mineral based, okay. And marine based means, marine based, these are those industries, the products we get from the sea and the ocean, जो हमें sea और ocean से जैसे products मिलते हैं, जैसे fish oil होता है, right, और उसके बाद आपकी इस तरह से बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है we get from the sea and oceans. So हमें इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, basically we have to focus on this. And on the basis of ownership, I know on the basis of ownership, private sector industries you know very well, those which are owned and controlled by private individuals. Public sector enterprise industries are those industries which are owned and controlled by the government. Private, which are owned and controlled by the private individuals. Joint sector, where the contribution of public as well as private individuals both is there, right. So this is on the basis of ownership. So basically in this chapter we have to focus on only this, that is your on the basis of size, small scale industries, medium scale industries and large scale industries. So let's understand that what is small scale industries. Understand that what is small scale industries, right. So basically it can be defined as one whose investment does not exceed 5 lakh, okay. When India got the independence, after that 1950s, first 5-year plans जब बनाए थे, so in that only it was focused that जिस भी इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक का होगा, that will be considered as a small scale industry, right. But in present scenario, अभी present scenario में according to the new norms and rules, the capital investment criteria is 5 crore till 5 crore, यानी from between 25 lakh to 5 crores. अगर किसी भी इंडस्ट्रीज में 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, so that will be considered as a small scale industry, right. And it is a labor intensive, here labor intensive techniques are used, यानी ये टोटली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है लेबर पे बेस्ड होती है, ओके. And these small scale industries promote regional development, right. Regional development means these types of industries can be set up in the rural areas also and a very small towns, ठीक है, छोटे छोटे टाउन्स में भी उसको सेटअप
किया जाता है, राइट. सो दैट दिस इज योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ओके, और यहाँ पे भी हायर वर्कर्स परफॉर्म द वर्क इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. cheap but skilled laborers are employed in small scale industries. इसमें cheap और skilled labor काम करते हैं, right. Capital investment in this small scale industry is higher than the cottage industries. We will understand that what is cottage industries. Okay, and sometimes some machines are used in this small scale industries. Okay, and the products which are usually produced in these small scale industries are small in quantity. Okay, next is the they provide employment to the rising population. देखो small scale industries अभी देखो प्रेजेंट सिनारियो में जब अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हम कुछ चेंजेस लाई थी, राइट. कुछ बजट्स पेश किए गए थे. इन दैट द गवर्नमेंट फोकस ऑन MSMEs. MSMEs क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, राइट. सो ये जो होते हैं दे फोकस ऑन दिस. क्यों? बिकॉज दे थॉट दैट कि बहुत सारे लेबर्स हैं वो जो अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, राइट. दे शुड गेट द एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड दैट कैन बी ओनली पॉसिबल व्हेन वी विल इंकरेज देम टू सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जब हम उनको इंकरेज करेंगे कि आप अपनी छोटी छोटी बिजनेसेस खोलिए, जिससे क्या होगा कि आपकी अर्निंग बढ़ी और आप और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. तो इसमें क्या किया गया? MSMEs पे फोकस किया गया कि उनको ईजिली लोन मिल सके. जो फंड्स हैं, फाइनेंस हैं, they can get easy finance. Okay, then only they can be encouraged. They will be encouraged to open all these things, small scale industries, right? So this is your small scale industry. इसमें investment criteria is up to, in the present scenario is up to 5 crores, right? Now this cottage industry. अभी cottage industry क्या है? It is the part of the small scale industry. ये part है small scale industries का, right? Basically it is also known as rural industries. इसका दूसरा नाम है rural इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कह सकते हैं. इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, राइट. इसको कोई भी घर के लोग दे कैन कम टुगेदर एंड दे कैन स्टार्ट दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. नाम से पता चल रहा है कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइट. एक कॉटेज में जो शुरू की जाए. ओके, ये बेसिकली इट इज ऑर्गेनाइज बाय द इंडिविजुअल्स विद देयर प्राइवेट रिसोर्सेज. जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ये उसी से ही स्टार्ट करते हैं उन बिजनेसेस को. जैसे फॉर एग्जांपल पिकल मेकिंग होगा, हैंडीक्राफ्ट हो गया. जो आर्टिस्ट्स होते हैं बेसिकली दे स्टार्ट दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इफ यू गो इन गुजरात यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज. वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बेचते हैं, दे मेक दैट हैंडीक्राफ्ट आइटम्स. तो आर्टिशियंस जो होते हैं दे प्रेफर दीज टाइप्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइट. इन दिस द फैमिली मेम्बर्स कैन बी यूज्ड एज अ लेबर. ठीक है, वो खुद यूज़ कर सकते हैं उनको एज अ लेबर. इन दिस द इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड इज वेरी सिंपल. ओके, बहुत सिंपल यूज होता है एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो. एनीबडी कैन स्टार्ट. इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतने तक गई. एनीबडी कैन स्टार्ट एंड इन दिस वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस. जैसे आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में सुना होगा, राइट. सो इस तरह की पेंटिंग्स भी फेमस है जो स्पेशल पेंटिंग्स होती हैं. अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, राइट. These types of industries considered as a cottage industries, right. So I hope that you have understood between the what is small scale industry and what is a cottage industry. So we will continue with the other topic in the next video. Thank you so much for watching this video.